Hello everyone, my name is Takir Khan. Welcome to our final year project PAX-A desktop application. This project was developed by our group under the supervision of Sir Aziz. Introduction. PAX-AI is a smart desktop app that allows users to run complete data science workflow for importing data, training machine learning model, work prediction, visualizing results, and export PDF reports, all without writing a single line of code. Problem statement. Data science often requires switching between Python, Excel, and R, which is time consuming and technical. Beginners struggle with coding. PAX AI solves this by offering end-to-end no-code solution in simple desktop app, reducing friction and improving accessibility. Proposed solution. Our app has four powerful pillars. First, unified ML interface, not tool switching. Second, voice assistant command, train a model using your voice. Third, smart automation, one-click visualization and PDF report. Educational focus, preload dataset and step-by-step help. Objectives. Objectives integrate CS. First is integrate CSV upload, ML training, visualizing and reporting. Second, achieve 90% accuracy plus model accuracy on real dataset, providing no-code tool for programmer, make a tool user for student and researcher. Third, technical implementation. Technical implementation. Technically, the front end is built HTML, CSS, and JavaScript using React.js. The backend is powerful by Python and Flask. We use Skitlearn for ML models, Chart.js for visualization, and JS PDF for exporting reports. Data follow through REST APIs, making the app modular and scalable. UX and accessibility. The app supports drag and drop dataset input, drop down for model selection, and even voice control. Use web speech API. It can understand over 12 voice commands like train model, visualize, and export report. चलें अब अभी हम फ्रंट एंड पे चलते हैं, उसे खोलते हैं. अब ये हमारा फ्रंट एंड ओपन हो रहा है. ये फाइनल ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये फ्रंट एंड है इसका. हम इसमें पासवर्ड देंगे इसको, और ये सारा फ्रंट एंड हमारा आगे है. And then that is the PAX AI interface. Tabs guide the user through uploading data, training a model, visualizing and reporting. Select a diabetes reporting, generate predictive analysis, browse. इधर हम कोई भी डाटा सेट अपलोड करेंगे, कोई भी डाटा सेट होगा. Diabetes data set. We're using the Pima Indian dataset, diabetes dataset. It contains 768 record and medical features like glucose, BM, blood pressure, and age. The goal is to predict if a person has diabetes. Choose random forest. ब्लड प्रेशर हम इसको आप यूज़ करेंगे. यहाँ पे आके यहाँ पे हम दूसरा फीचर चूज़ करेंगे. इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे आके हम आउटकम चूज़ कर रहे हैं. फिर यहाँ पे हम रैंडम फॉरेस्ट चूज़ करेंगे, ट्रेन मॉडल करेंगे. द backend send this dataset to Flask API where the model is trained on this dataset, achieve 81% accuracy, which is very strong and medical prediction task. अब हम सेव करें. अब now we test our model, we new patient data based on the values. मतलब कोई भी हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे. The model predict whether the person is diabetic or not. This case is return. कोई भी हम मान लो ऐसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वैल्यू आएगी. मतलब आउटकम इसका प्रिडिक्ट किया हमने, आउटकम तो वो 0 है. ब्लड प्रेशर, जिसको डायबिटीज़ नहीं है. जनरेट ओपन द रिपोर्ट.
The app automatically generates a graph showing the feature importance. यहाँ पे हम लाइन प्लॉट पे जाएंगे, ब्लड प्रेशर ये सिलेक्ट हमने किया, उसके बाद इंसुलिन हम कर रहे हैं, ये सारा ग्राफ शो हो के आगे है। कोई भी हम चूज़ कर लें, बार प्लॉट, लाइन प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, उसने सारा हमें बता दिया। इधर जनरेट ओपन रिपोर्ट। We also export a professional PDF report that include accuracy, select model and graph summarize. This is especially helpful for academic and medical use. अब हमारी ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, ये सारा रिपोर्ट आ गई जो हमने जनरेट करवाई थी। मॉडल पे ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, आउटकम इसका आया। यहाँ पे ये प्रोफेशनली एक उसने रिपोर्ट हमें जनरेट करके दी है। अब दिस फ्यूचर वर्क, फ्यूचर हमारा जो फ्यूचर वर्क है ना, जो फ्यूचर इन्हांसमेंट है, we plan to add mobile version of Android, iOS, cloud-based model training for team, auto ML for deep learning, and enterprise feature like login and user access levels. Conclusion और इसकी जो summary है वो PEX AI simplify the complexity of data science. We achieve 90% over 90% accuracy, built a voice control desktop app and automated the entire ML process, making it accessible to everyone, not just coder. Thank you for your time. We hope you enjoy and demo for PEX AI.